Good afternoon, everybody. Today I'm Orvi from Goenkan Prime TV. I'm here with the latest news headlines. Here are some international news. American reporter has got a big blow from Moscow court. The Wall Street Journal reporter arrested in Russia on spying charges will have to remain in jail till the end of June. Now some national news. India successfully fired a new ballistic missile in Andaman. This Prithvi 2 air missile can hit target at a distance more than 250 kilometers. From Sports World, Lucknow defeated Chennai by 6 wickets. Stoinis' innings of 124 runs overshadowed Rituraj's century. Now some local happenings. Hanuman Jayanti was celebrated with pomp across the district on Tuesday. The main program of Hanuman Jayanti took place at Sri Salasar Dham temple located in town park of the city. Let's know our weather. Today weather in Sirsa is mostly sunny with the maximum temperature of 39 degrees Celsius and minimum temperature of 23 degrees Celsius. Some Goenkan news. Goenkans commemorate Panchayati Raj Day, highlighting village panchayats' vital role in local governance, fostering community development and empowering rural India. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं कोहिनूर स्वागत करती हूं आपका हिंदी समाचार के साथ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मास्को की अदालत में अमेरिकी रिपोर्टर को बड़ा झटका लगा। जासूसी के आरोप में रूस में गिरफ्तार किए गए वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को फिलहाल जून के आखिर तक जेल में ही रहना होगा। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। भारत में अंडमान में एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह पृथ्वी 2 वायु मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य का भेद सकती है। अब बारी खेल जगत की। लखनऊ ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। ऋतुराज के शतक पर स्टाइनिस की 124 रन की पारी पड़ी भारी। आओ जाने स्थानीय हलचल। जिले भर में मंगलवार को हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के टाउन पार्क में स्थित श्री सालासर धाम मंदिर में हनुमान जयंती का मुख्य कार्यक्रम हुआ। गोएंकन समाचार। गोएंकन्स ने पंचायती राज दिवस मनाते हुए सुबह की सभा में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला और ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला। धन्यवाद। बने रहिए पंजाबी समाचार के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਡਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 2 ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ 2050 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਲਖਨਊ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਟੋਇਨਿਸ ਦੀ 124 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਿਤੂਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਗੋਇੰਕਨਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। नमस्कार है अहम आहना अस्मि संस्कृत समाचार है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता अमेरिकन संवाददातात मास्को न्यायालयात् महत् आघातं प्राप्तवान् रूसदेशे गुप्तचर्या आरोपेण गृहीतः वॉल स्ट्रीट जर्नल इति संवाददात् जून मासस्य अन्तने यावत् कारावारे एव तिष्ठितव्यः भविष्यति। राष्ट्रीयवार्ता अंडमान नगरे भारते नूतनस्य बैलिस्टिक क्षेपणास्त्रस्य सफलतया परीक्षणं कृतम्। एषा पृथ्वी 2 वायु क्षेपणास्त्रं 250 किलोमीटर अधिकं दूरं लक्ष्यं प्रहायितुं शक्नोति। क्रीडाजगतवार अस्ति। लखनऊ चेन्नई नगरं 6 विकेटः पराजितवान्। स्टोइनिसस्य 124 रनस्य पारी ऋतुराजस्य शतकस्य उपरि छायाम् अयच्छत्। स्थानीयकार्य पश्यामः। मंगलवासरे सोमपुरने मण्डले हनुमान जयंती धूमधामपूर्वकं मन्यते। हनुमान जयंती इत्यस्य मुख्य कार्यक्रमः नगरस्य टाउन पार्के स्थिते
श्री सारस्वत धाम मन्दिरे अभवत्। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरस्य मौसमः आंशिकरूपेण सूर्यमयः अस्ति, यत्र अधिकतम तापमानं 39 डिग्री सेल्सियस्, न्यूनतम तापमानं 23 डिग्री सेल्सियस् भवति। विद्यालयस्य वार्ताः। गोइङ्कन् जनाः पञ्चायती राज दिवसस्य स्मरणं कुर्वन्ति, यत्र स्थानीयशासनस्य सामुदायिक विकासस्य ग्रामीणभारतस्य शक्तीकरणस्य च ग्राम पञ्चायतानां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रदर्शयन्ति। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, hier ist Johanna aus Keuken-Nachrichten-Raum. Heute in Nachrichten ist internationale Nachrichten. Amerikanischer Reporter hat vor Moskau Gericht einen schweren Schlag erlitten, der in Russland wegen Spionage vorwürfen festgenommen, Reporter des Wall Street Journal muss bis Ende Juni im Gefängnis bleiben. Nationale Nachrichten. Indien hat erfolgreich eine neue ballistische Rakete in Andaman abgeführt. Diese Prithvi 2 Luftrakete kann Ziele in einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern treffen. Sports Nachrichten. Lucknow besiege Chennai mit 6 Wickets. Stoinis Innings von 124 Runs überschreiten Rekord-Century. Lokalnachrichten. Hanuman Jayanti wurde am Dienstag im gesamten Bezirk Mitpam geführt. Das Hauptprogramm von Hanuman Jayanti fand im Sri Saraswat Dham Tempel in Stadtpark der Stadt statt. Wetternachrichten. Heute ist das Wetter in Sirsa teilweise sonnig mit einer Höchsttemperatur von 39 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 23 Grad Celsius. Goinkan-Nachrichten. Goinkans beginnen den Panchayati Raj Tag und haben die wichtige Rolle der Dorfpanchayat bei der Lokalverwaltung. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.